Hi all, welcome again. Okay, so yeah, in the yesterday's lecture, in the last lecture, right, we have covered few points surrounding to the STLC. Okay, STLC is nothing but your software testing life cycle, and it is one of the part or phase of your SDLC, that is the software development life cycle. SDLC is for your complete software development journey, right? Within SDLC, there are 6 phases which we have covered. That is the requirement analysis and collection and analysis, then design phase, coding phase, testing phase, right? Your deployment and maintenance phase. So these are the different phases of your SDLC, software development life cycle. And within a SDLC, there is one phase that is the testing phase, and within this phase STLC comes in a picture. Okay, and that is the software testing life cycle, which comes under your testing phase from the SDLC, right? Software development life cycle. And for this STLC we have different phases as well here. Okay, so what are the different phases here? Like requirement analysis and test planning. Okay, and what will be the outcome as we discussed in this last session? Planning, test planning document. Okay, so what will be the outcome guys? Test planning document, यहाँ पे हमें as outcome मिलेगा. Then next task is to perform the test case design, right? And what will be the outcome? Test case document, right? Then next, once we done with the documentation part, then next thing is to set up the environment. When it comes to the mobile, we should have some dummy mobile for the testing, right? And when it comes to the web application, we should have some system, some configuration where that particular build needs to be deployed, right? Okay, that one is the testing environment. We'll have one more dedicated slide for this as well. Okay, then test case execution, whatever test case we have designed up here, right, based on the requirement that we are going to execute in this test execution phase. Okay, once we done with the execution, we'll be making a report like what is the actual and what is the expected. So if there is a deviation, we'll be marking that as a defect and we are creating the defect report, right, as a test engineer. Okay, once that particular defect is fixed from the development side, then we'll be performing retesting in order to ensure whether that bug is fixed or not, right? And due to that bug or any additional changes in the application, in order to check if there are another models which are impacted or not, for that purpose we are doing the regression testing as well. Okay, once we found like all the whatever bug we have reported, as well as whatever all the test cases we have designed, that all the test cases are all executed, as well as all the reported bugs are fixed and retested, and regression testing is also done, and based on the exit criteria, right, so we'll be keeping our test cycle closure, right? So where we are analyzing how many test cases we have executed, how many bugs are found, right? We are creating a report for all the prerequisite stuff. Okay, yes, so this one is your STLC phase, right? And during this phase we have covered a few examples, like we have 1,000 number of manu we have written 1,000 cases manually, right? So out of that, like for each test case we need a 1 minute, so in 1 multiply by 1,000 means we need 1,000 minutes for execution of all 1,000 cases, right? So out of that, we as an automation test engineer, we need to figure out which test cases needs to be keep for the regression purpose or automation purpose, so that we can automate them, right, on functionality side using the automation tools, right? So GUI testing we can have it manually, as well as for non-functional there are another tools, right? And usability also we can do it manually, right? So yeah, from this we need to target out which test cases need to be reused for the automation purpose, right? So yeah, automation always reduces the work as well as the number of testers dependency for a particular project, right? So yes, once we're done with this testing phase, then next SDLC phase comes in a picture, that is the deployment and maintenance. That part we have already covered. Okay. Okay, fine. Yeah, we'll be moving ahead with the next terminologies, so that you'll have idea and clear understanding about different report, different terminologies we are going to use. Okay,
Fine, let me share the screen. Yeah, okay, fine. So yes, so from today, like we are actually focusing on the testing concept so that you'll have a clear understanding over here. Fine, okay. In the last session, also we have covered the test plan and its different types. It what does it contain, right? That we have covered. Okay. So we'll be starting with the use cases, test scenario, and test cases. Guys, these are the important terminology from the perspective of test engine, right? We should focus on this terminology. Okay. So let's move ahead one by one. Use case. Okay. Then what is the test scenario and then what is the test case, right? We'll be starting with use case first. Use case describes the requirement. सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट. यूज केस जो है हमें रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की ये बताती है, राइट? यूज केस लिस्टेड इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन अ पिक्चोरियल फॉर्मेट. ओके, जो भी आपका पर्टिकुलर यूज केस रहेगा ना, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, EFRD, राइट? सिंपल. Okay, and it is represented into some pictorial format. Okay, pictorial means graphical format. Okay, then use case contain three items basically. Okay, it is consist of three parts. One is your actor, another one is action, and third one is your outcome or goal. Okay, what is actor? Which is the user, end user is your actor. For example, I'll tell you one example. Okay, actor is nothing but your user, which is a single person or group of person interacting with your process. Okay, for example, we have a mobile application or a website, and for once we log into, like once we open the particular web application or mobile application, firstly we need to do a registration. So in that scenario, we as a actor or we as a end user. Fine, sorry. Then action, which is to be uh, reach the final whatever steps we are following to do a registration with the mobile application or web application, that are the different actions, right? And what is the outcome or goal? Like we should be able to successfully register the particular application, right? Let's take an example of Facebook, right? If we want to open the account, or let's take an example of Gmail. Firstly, what we do need to do, we need to create an account, right? So we as can be considered as an actor, like we are performing set of steps, like we are passing the username, we are passing the our first name, last name, and some few basic details, right? So that are the part of your action. Guys, please keep on mute. Yeah, thank you. Okay, so these are the part of your actions, and what is the outcome? Like our account is created successfully, that will be the outcome, right? So yeah, when it comes to the use case, there are three important parameters, like actor, action, and outcome, right? And what does use case describes? It clearly describes the customer requirement. Okay, or we can say requirement. It belongs to the use case. Based on this use case, we are further deriving the test scenario. Let's see how. Okay, a possible area to be tested is nothing but your test scenario. Okay, basically it covers what to test. For example, we have taken an example of Gmail application. For account creation, what we need to do, we need to create an account. Okay, so for example, that one is the use case. As a end user, we need to create an account. Okay, that one is, for example, use case. In that situation, we or an end user is an actor. What steps we are performing? Like we are passing the first name, last name, date of birth, mobile number, these basic details we are passing for the account creation. That all comes under your actions. And what is the outcome? A successful account creation, that one is your outcome, right? Okay, so this one is your use case, and based on this use case, we can have multiple test scenario. For example, we can have positive test scenario, we can have negative test scenario. For example, during account creation, we need to pass username, sorry, we need to pass first name, then last name, then your mobile number, right? Then your date of birth. So basically these four are mandatory details, and out of this you are passing all the four details. Okay, that one becomes your positive scenario. If you are passing only three
details, and you are skipping the fourth mandatory detail, right? So in that scenario it will be your negative scenario. Okay, likewise you can have multiple scenarios, only passing the first name, only passing the last name, and you can have combination of it, right, depending upon the type of scenario. Okay, so there will be different test scenarios, and this is nothing but what to test, what we are going to test. We are testing only first name, we are testing only last name, we are testing only mobile number. And for a particular field, as we have covered two main techniques for the testing, that is the input domain testing in case of your input domain testing, as well as boundary value analysis and equivalence class partitioning. These two techniques we are going to use for the input domain, right, for a particular input text box. Okay, so based on that there will be a different test scenario from positive side as well as from negative side. So test scenario always describes what to test, right? And yes, and third one is important, that is the test case. So based on your test scenario we'll be having multiple test cases. Okay, so what is test case in a single line? It's a step-by-step action performed to validate the functionality of application that is under test. Okay, these are the simple steps, like please in first step enter your first name, second step enter your last name, third step enter your date of birth, fourth step enter your mobile number, right, and click on create account. So these are the stepwise approach we are putting into the test case. Okay, stepwise actions we are performing in order to validate the functionality of application is nothing but your test case, right? Test case contain your test step, expected and actual result, because yes, from your expected and actual result we are going to check whether that particular test case is pass or fail, right? So guys, these are the three important terminologies from the testing purpose. One is your use case, which describes the action, it having three parameters: actor, action, outcome. Okay, when it comes to the test scenario, so it is describing what to test, right? And when it comes to the test case, it is a step by step, we are writing the test case in order to create that scenario. Fine, so these are the just theoretical terminologies, we'll see into the detail. Okay, so there will be always question like what is difference in between use case and test case, right? Okay, let me put some details here. So use case describes the functional requirement, right? And it is generally prepared by your business analyst. Okay, because he knows requirement very well. जो भी particular business analyst है वो client के साथ उनका particular अच्छा interaction होता है, right, on a day to day basis requirement के लिए. So जो भी end client की requirement है वो अच्छे से किसको पता रहेगी? Business analyst को, right? Hence it comes under the use case. Okay, when it comes to the test case, it describes the test steps and produce test steps prepared by the test engineer. जो particular हमें क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है ये किसको पता रहेगा? तो to the test engineer, right? This one is in our scope and this one defines by the business person, right, in the functional requirement itself. Okay, so yeah, deriving the use cases is the responsibility of BA and deriving the test cases is the responsibility of ours, that is the test engineer, right? That is the main difference. Okay, fine. Okay, then there will be another question. Okay, what is difference between test scenario and test cases, right? A small difference. Test scenario is nothing but what to be tested, हमें टेस्ट क्या करना है, it defines by the test scenario, and test case defines how to be tested, हमें step wise manner में कैसे check करना है, it is defined by the test case. Okay, what to be tested is it is defined by test scenario, and how to be tested it is defined by your test case. Okay, so let's take an example guys. So यहाँ पे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. हमने अभी तक तीन ही टर्म्स देखे गाइस, ओनली थ्री टर्म्स वी हैव कवर्ड: use case, test scenario and test case. Use case describes the requirement, test scenario describes what to be tested, and test case describes how to be tested. Fine. Okay,
Surrounding to this, we are going to discuss more. Fine. So let's take an example. Okay, one moment. Okay, fine. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं so that we'll have more clarity on this front. Test case, sorry, test scenario. Test scenario is nothing but what to be tested, right? Okay, checking the functionality of login button. See guys, यहाँ पे हम किस चीज कौन सा सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं? चेकिंग द फंक्शनैलिटी किस चीज की? फॉर लॉगिन बटन, फॉर पर्टिकुलर लॉगिन बटन हम फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं. तो इसमें मल्टीपल हाउ टू बी टेस्टेड, इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस कैसे हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट वन टेस्ट केस, टीसी मींस टेस्ट केस. ओके, टेस्ट केस वन, क्लिक द बटन विदाउट एंटरिंग यूजर नेम पासवर्ड. फॉर एग्जांपल हमारे पास जीमेल की फंक्शनैलिटी है जहां पे यूजर नेम पासवर्ड पुट अप करके हमें लॉगिन करना है, राइट? तो इन दिस सिनेरियो हमने फर्स्ट टेस्ट केस कंसीडर की. हमें पता है व्हाट टेस्ट सिनेरियो मींस व्हाट टू बी टेस्टेड. हमें टेस्ट क्या करना है? लॉगिन बटन. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट टेस्ट केस हमने अज्यूम कर ली, हमने डिराइव की है कि क्लिक द बटन, लॉगिन बटन विदाउट एंटरिंग यूजर नेम पासवर्ड. हमने यूजर नेम और पासवर्ड पुट अप नहीं किया और डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक किया. दैट वन इज द फर्स्ट टेस्ट केस. देन सेकंड टेस्ट केस, सी गाइस, click the login button only entering username. Okay, second test scenario, sorry, second test case में हमने क्या किया? Simply username put up किया, password नहीं put up किया और directly login पे click किया. That is your second test case. In third case, in third test case, click on the button while entering wrong username and wrong password, right? Okay, so this one is your third test case. Okay, for this different test cases, we can derive the testing data or test data using our previous methods. Okay, for this we can use what we can say, we can use that decision table like username valid, password valid, then able to log in, right? That is your outcome. Okay, your username invalid, password valid, still not able to log in, right? Likewise, you can create a simple table and based on that you can have multiple test cases for your single test scenario. Okay, yes, fine. Okay, any question here guys? No, sir. Please repeat. Yes, okay. लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया है वो, मतलब ठीक है, yes, सिमिलर वर्ड लग रहे हैं ना सब. हाँ, right, yes, I know. Yeah, okay, we'll see here. Okay, I'll yeah, repeat one more time so that guys you'll have more clarity. First कौन सा हमने terminology देखा था? Yes, I need test, sorry, first one is use case, cases. right? First one is your use case. Second one guys, सिनेरियो. Test test scenario. scenario, right? Perfect. And third one, टेस्ट Test case. test case, right? हमें तो पहले all three names should be okay, no, known to us. Okay, so use case is nothing but your, it describes Requirement. perfect, it describes your requirement, or we can say Yes. client requirement. Fine, client requirement. Okay, okay, client requirement, it describes the client requirement. Okay, basically it is having it contains three parameter. One is actor. Actor means your end user, right? Yes, sir. Another one is your action, means Action. what action he is going to perform, and final is your outcome, or you can say output. So basically use case describes like the client requirement. Okay, and within that client requirement there are three main factors: actor, action, outcome. So this requirement is already documented within your functionality document or business requirement document, right? So the requirement will be like, as a okay, as a end user, I should see, oh, I should able to log in the, I should able to log in the Gmail application. Okay, or I should able to create, we can say,
or login, simple. Okay, login. Okay, as an end user, I should able to log in the Gmail application with valid username and password. Okay, so for example, this one is your use case. It's a kind of plain English language, okay, which describes who is your actor. Actor is nothing but your end user. What action he is going to do? He is going to log into the application. That is the action. And what will be the outcome? Like he'll able to log into the he should able to log into the application with valid username and password. That one is the outcome. Okay, so based on this use case, one moment guys, sorry. Okay, so based on this use case, like we'll be having, okay, based on this use case, we'll be having test scenario, right? So under test scenario, we need to decide what to be tested, right? Test scenario always describes what to be tested. Okay, it always describes what to be tested. So in this requirement, what we are going to test, we are going to test the login functionality to the application, right? We are going to test login functionality to the application, right? This one is our test scenario, right? This one we are going to test login functionality to the application. Okay, fine. We know we have to test login functionality. Then next one comes in a picture, that is the your test case. Test case describes how to be tested, right? How to be tested, right? It describes how to be tested. हमें जो भी टेस्टिंग करना है, ओके, हमें पता चला कि रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ये है, टेस्ट सिनेरियो से पता चला कि क्या चेक करना है, क्या टेस्ट करना है, बट टेस्ट केस से हमें एग्जैक्टली क्या पता चलता है, हाउ टू बी टेस्टेड, हमें चेक कैसे करना है, राइट? सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. Okay, it's a step by step approach to test the functionality of application, right? It is a step by step approach to test the functionality of approach. So इसमें different test cases कैसे derive हो सकती है, देखिए जैसे हमने with example देखा था. First one, okay, check, we can say verify or test, verify the application with entering only username. Fine. Second test case क्या हो सकता है आपका? We can Verify the verify application with entering only password. password. Perfect, right? Verify the same different test cases can be created. Okay, verify the application application login, we can say login. Okay, we are testing the login functionality. Application login with entering only password, right? Okay, so this one is your second test case. Likewise, we can have another test case, guys. Like we can Verify the application login with Mhm. invalid username password. Yes, without this entering. yes, that can Without also entering. be test, that can also be without entering any details, like hum without, okay, without entering username, right? Valid and input. password. Username and password without भी हम check कर सकते हैं. That one is also your test scenario. Likewise, we can have another test scenario, like okay, for example, in this case we have enter a valid username, we can enter only then we can enter invalid username. Likewise, see, we can have combination like this, like username, you can create a simple test data. Okay, this is called as test data, right, for your test cases. Fine, you can simple make a chart like this, username, then we can have password, and then like output. Okay, what should be the output, right? If the username is valid, sorry, username is valid and your password is also valid, right? So in that situation, you should able to Login. log in, right? You should able to log in, right? In a similar manner, you can have different combination, invalid, Valid. and your password should be valid. Okay, likewise, you should not allowed, Not right? allowed. You are not allowed to
login, right? Likewise, you can have different set of data, and for different set of data you can write the test case accordingly, right? So guys, have like आपको difference, अभी key difference पता चला तीनों में क्या है? Yes, yes. मतलब एक्चुअल में डिफरेंस है, राइट? अगर आपको नेम में भी सिमिलरिटी लगती है, बट एट एक्चुअल डिफरेंस है तीनों में, करेक्ट? Yes. In a single line, what we can say, use case describes the client requirement or requirement simple. Test scenario defines what to be tested, and test case defines how to be tested. Simple. Done? Okay. Sure. Fine. Okay, I'm again sharing the presentation. Okay, so yes, see guys, we have covered use case. It describes the requirement. It is having three parameters: action, sorry, actor, action, outcome. Test scenario nothing but what to be tested, and test case define how to be tested, right? We have covered the basic difference between use case and test case. Use case describes the functional requirement, and it is basically prepared by your BA during the documentation, and test case describes the different steps to perform particular application testing, right? So this will be prepared by test engineer or testers. When it comes to the test scenario and test cases, test scenario defines what to be tested, right? For in this situation we are testing login functionality, that is your test scenario, checking the functionality of login, and based on that we can have multiple number of test cases in order to check that login functionality. How to be tested comes under your test case. Okay, so these are the three basic terminologies surrounding to your testing concept. These are the important ones. Okay, fine. Okay, now guys, based on this we have one terminology, that is the test suite. इट इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. ओके, हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, सो एट दैट टाइम हमें टेस्ट सूट ये टेस्ट सूट हमें बनाना है, टेस्ट सूट एग्जीक्यूट करना है, इस तरह से बोलते हैं सभी. ओके, टेस्ट सूट इज नथिंग बट a group of test cases which belongs to same category. Simple. Test suite means what? Group of test cases, मतलब number of group of test cases which belongs to same category. Okay, जैसे हमने देखा था, देखिए सैनिटी हम स्टार्टिंग में परफॉर्म करते हैं, देन फंक्शनल टेस्ट, जैसे सैनिटी स्मोक खत्म होता है तो हम फंक्शनल टेस्टिंग पे जाते हैं. देन रिग्रेशन, कोई भी बग फिक्स होता है या कोई भी चेंज होता है ड्यू टू दैट इम्पैक्टेड मॉड्यूल अगर है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, राइट? सो हर एक टेस्टिंग जो है पर्टिकुलर, उसके सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो भी टेस्ट केस रहेंगे ना, तो हम उनको ग्रुप कर देते हैं, एंड उसी ग्रुप को हम बोलेंगे बेसिकली sanity test case suite. Okay, your second suite is nothing but functional test case suite. Third one suite is nothing but your regression test case suite. Test suite is nothing but some group of test cases which belongs to same category. मतलब हमें sanity test perform करने के लिए जितने भी number of test cases चाहिए, similar test cases हम एक document में as of now आप ऐसे समझिए, excel एक एक्सेल में पुट अप करते हैं, दैट इज योर टेस्ट केस वन, टेस्ट सूट वन. सिमिलरली आपके पास दूसरा टेस्ट सूट रहेगा फंक्शनल की टेस्ट केसेस के लिए, उसमें नंबर ऑफ फंक्शनल टेस्ट केस रहेंगे. एंड थर्ड वन टेस्ट सूट रहेगा आपके पास, टेस्ट डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें आपके रिग्रेशन के टेस्ट केसेस रहेंगे. एंड कंबाइनली सारे जो टेस्ट केसेस है फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट हमें लगेंगे, एंड दिस कवर्स अंडर योर टेस्ट प्लान. ओके, क्लियर है ऑन टेस्ट सूट साइड? यस, क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, जैसे 1000 टेस्ट केसेस है तो जीयूआई के लिए अलग कर रहे हैं हम, फंक्शनल के लिए अलग है, नॉन फंक्शनल के लिए अलग है, राइट? So likewise, each group of test cases can be your test suite. Simple. This is simple terminology. Test suite. Test suite is nothing but terminology which belongs to similar sort of your test cases. Fine. Okay. So yes, this one is the fourth terminology. First is your use case. Then based on use case, we are deriving test scenario. Based on that, we are deriving test case. And group of test case is nothing but your test suite. Yes, fine. Okay. So yeah, now we'll move further in detail into the test case. Now we clear on the what is use case, we are clear on the what is test scenario, and we are clear on the what is test case, right? And group of test case is nothing but your test suite.
वी आर मोरली गोइंग इन डीपर इनटू द टेस्ट केस, बिकॉज हमें जो भी राइट करने हैं वो बेसिकली टेस्ट केसेस ही है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि एक टेस्ट केस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से फील्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका एक्सेल डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सारा कुछ हम अभी कवर करेंगे, राइट, विद इन अ टेस्ट केस। वन मोमेंट। Okay. So there will be a question like what is test case, or we should know test case because this is the important parameter. See, test case is a set of actions executed to validate the feature or functionality of software, right? These are the simple steps performed to check the functionality of software. Okay. Before final review, we are maintaining all test cases in Excel sheet only, right? कोई भी आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई भी टूल है, राइट, कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है जहां पे आप ये सारा कुछ चीजें डिपेंडिंग अपॉन कंपनी मेंटेन करते हो, बट बिफोर गोइंग टू एनी टूल हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इट शुड बी मेंटेन विद इन योर एक्सेल शीट, राइट। ओके, जैसे ही टीम के साथ इसका रिव्यू होता है, राइट, सो सिमिलर टेस्ट केसेस हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो जीरा इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जहाँ पे हम टेस्ट केस भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये हमें स्कोप है इसका आगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमें समझना है कि टेस्ट केस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, जैसे टेस्ट केस में टेस्ट केस आईडी रहेगा, ओके, देन टेस्ट केस टाइटल रहेगा, टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन रहेगा, देन प्री कंडीशंस, मतलब पर्टिकुलर टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ प्री कंडीशन तो नहीं है, वो रहेगी। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर प्रायोरिटी, राइट, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। देन रिक्वायरमेंट आईडी, मतलब जो भी कस्टमर या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसका पर्टिकुलर आईडी रहेगा। देन स्टेप्स रहेंगे, हाउ टू टेस्ट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, टेस्ट डेटा रहेगा जैसे हमने क्रिएट किया था यूजिंग ईसीपी बीवीए, right? Then state transition technique, then error guessing technique, right? These are the techniques for creation of your test data. Then expected result क्या है, हमें expected क्या है as a requirement and actual क्या मिल रहा है during execution. So these are the few important parameters or columns for your test case document. Okay, fine. ओके, विल हैव वन टेम्पलेट, हमें अपकमिंग सेशंस में इसके टेम्पलेट भी आपको शेयर करूंगा, राइट। सो वहां पे आपको जब भी हम प्रोजेक्ट पे आएंगे ना, राइट, वहां पे हम यही सिमिलर सॉर्ट ऑफ टेस्ट केस टेम्पलेट वहां पे यूज कर रहे होंगे, राइट। सो वहां पे आपको और मोर क्लैरिटी मिलेगी। दिस वन इज योर टेस्ट केस डॉक्यूमेंट एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। ओके, so next one is guys requirement traceability matrix. Now we are just covering up the terminologies. Okay, we'll have scope for these terminologies as well. Okay, requirement traceability matrix, its short form is RTM, requirement traceability matrix. इसके नाम में ये देखो किस चीज का हम ट्रेस कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट का, और उसका पर्टिकुलर क्या बना रहे, मैट्रिक्स, राइट। So what is RTM? RTM is nothing but requirement traceability matrix. ये basically क्या क्या इन्वॉल्व होता है RTM में? It describes mapping of requirement with the test cases. Simple एक लाइन में हम जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसका एक पर्टिकुलर आईडी रहेगा और उसी आईडी के अक्रॉस हम टेस्ट केस बना रहे हैं, राइट। मतलब एक रिक्वायरमेंट थी, उसके अगेंस्ट हमने कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनाए हैं उसी का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज RTM, that is the requirement traceability matrix. It is nothing but mapping in between your requirement and your test cases, right? So the main purpose of RTM is to check or to see how many number of test cases we have covered, right? Its main purpose is to see how many number of test cases we have covered against the particular requirement, so that there will be no functionality missing while performing the testing. So इसका main purpose क्या है कि हमारे पास client की requirement है और particular requirement के लिए कितने number of test cases हमने बनाए हैं उसका simple mapping रहता है, right? Upcoming slides में आपको दिख जाएगा। Okay,
वन रिक्वायरमेंट कैन हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस। आपके अगर एक रिक्वायरमेंट है तो उसके अगेंस्ट आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, राइट। चलो ओके, हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में हमें क्या क्या चीजें चाहिए? रिक्वायरमेंट आईडी, राइट, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट केस आईडी, फाइन, okay. So yeah, this one is your sample RTM, guys. RTM stands for requirement traceability matrix, traceability matrix. right. It's a mapping in between your requirement and your test cases, right. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी फंक्शनल बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, राइट, उसमें रिक्वायरमेंट्स है ऐसे 1 2 3 4 लाइक वाइज 100 नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, जो भी बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट है उनके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा, राइट। उस सेम आइडिया के अगेंस्ट उसका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो ये रिक्वायरमेंट किस चीज की है? लॉगिन फंक्शनलिटी की है, ओके, लॉग इन टू द एप्लीकेशन। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, हमने डिफरेंट टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे, राइट। सो सिमिलर जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, उतने सिमिलर टेस्ट केसेस हम कहाँ पे पुटअप कर देंगे? टेस्ट केस आईडी के जगह पे। एंड जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन खत्म होता है ना, तो उनका मैपिंग यहाँ पे कर देंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए हैं, कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास हुए, फेल हुए, वो आगे आएगा हमें। बट सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है रे, कि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट हमने कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखे हैं। सो दैट कोई ऐसी तो रिक्वायरमेंट नहीं है जिसपे हमें टेस्ट केस बनाना बाकी है, यहाँ से हमें पता चलता है, राइट। हेंस इट इज कॉल्ड एज आरटीएम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्लियर है गाइस आरटीएम पार्ट पे? हेलो। हेलो। यस सर आरटीएम नहीं समझ में आया। आरटीएम मींस सिंपल, आप समझो आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट है, आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, एंड ये कौन बनाएगा? बीए राइट, ठीक है, एज ऑफ नाउ एनालिस्ट। इतना ही समझो, बीए ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, उसके पास फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के लिए नंबर तो रहेगा, सिंपल है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें लॉगिन चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट है, हमें कोई टिकट क्रिएशन का फीचर चाहिए, थर्ड रिक्वायरमेंट है, हमें टिकट सर्च करना आना चाहिए, राइट। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, ओके। तो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, राइट, ठीक है, ओके। सो इसी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल लॉगिन रिक्वायरमेंट की जैसे हमने लास्ट मतलब अभी जस्ट नाउ बात की थी, तो उसके अगेंस्ट हमने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे, पॉजिटिव, लाइक वैलिड, इनपुट, इनवैलिड, करेक्ट है? यस सर। हाँ। सो जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम क्रिएट करेंगे ना, वो सिंपली यहाँ पे मैप कर देंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमने 4 टेस्ट केसेस बनाए, 3 टेस्ट केसेस बनाए, जो भी है, ओके। एंड जैसे हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो पास हो गई या फेल हो गई, ठीक है, उसका स्टेटस भी रहेगा। सिंपल मैपिंग रहेगी आपकी, रिक्वायरमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस आईडी एंड स्टेटस, डन, इतना ही है, ओके ओके, फाइन, यस। ठीक है, चलो, फाइन, ओके। सो यस, चलो एक बार रिकलेक्ट करते हैं, सबका है ना इन बिटवीन लिंकिंग है, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन, ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया गाइस कि व्हाट इज यूज केस, राइट। तो थोड़ा इसी पे फोकस करते हैं, राइट। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ओके। यूज केस इज डिस्क्राइब द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आप पकड़ के चलो, दिस वन इज योर रिक्वायरमेंट आईडी, requirement ID, for example 001 is your requirement ID, this one is the customer requirement or client requirement, right. Based on this requirement we have derived the test scenario for login functionality, right. And based on this requirement or based on this test scenario we have derived how many number of test cases guys here? कितने टेस्ट केसेस बनाए हमने? 4 टेस्ट केसेस राइट किया, राइट। सो वही, यस, सो यस, करेक्ट। फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव वन एक्सेल डॉक्यूमेंट, हमारे पास एक एक्सेल डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसमें हम सिंपल फर्स्ट कॉलम पे पुट अप करेंगे रिक्वायरमेंट आईडी, इसका क्या रहेगा रे? डिस्क्रिप्शन, राइट, डिस्क्रिप्शन, ओके। देन क्या रहेगा आपका? टेस्ट केस, राइट, दिस इज राइट, टेस्ट केसेस, एंड उसका स्टेटस रहेगा, सिंपल सी, रिजल्ट। राइट, रिजल्ट उसका, ओके। सो कौन से रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी लॉगिन की, राइट। सो लेट मी पुट दैट हियर,
ओके रिक्वायरमेंट, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉगिन फंक्शनैलिटी है। और टेस्ट केसेस कितने लिखे एज ऑफ नाउ हमने, 4 टेस्ट 3 केसेस, 4 4 4 राइट। टीसी Yes. 1 likewise 2, sorry, likewise 2 3 4, so these are the number of test cases we have written, okay। और जैसे हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है तो हम क्या करते रहे, एग्जीक्यूशन भी करते हैं। तो इसमें से फॉर एग्जांपल 2 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए एंड पास 2 फेल हो गए, ठीक है। इसका एक ऐसा पर्टिकुलर हर एक रिक्वायरमेंट में कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, ये पास फेल बाद में होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, बट उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट बना सकते हो, राइट। रिक्वायरमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, इसी को हम क्या बोल सकते, क्या इसी को क्या बोलते हैं, यस आर टी एम, RTM RTM. yes, that is the requirement traceability matrix. It's a, yes, it's a mapping in between, tell me, your Requirement. requirement, and right? test cases. Yes, perfect, requirement and test case, done है, clear है on the RTM side। रिक्वायरमेंट Yes. किसके पास से रहेगी, फ्रॉम द क्लाइंट एंड, कौन काम करेगा फ्रॉम द रिक्वायरमेंट लाने के लिए, बी है। टेस्ट केस किसके एंड से रहेगी, फ्रॉम द टेस्ट इंजीनियर, कौन काम करेगा इस पे, टेस्ट इंजीनियर, राइट, ठीक है, यस। सो ये था बेसिकली आपका आरटीएम, और ये डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए हमें, इन ऑर्डर टू चेक जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बोली है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए रे, टेस्ट केसेस होना चाहिए, सो दैट वी आर इंश्योरिंग जो भी हमने टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हर एक रिक्वायरमेंट हम कवर कर रहे हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई Yes, sir. क्वेश्चन, क्वेरी, क्लियर है गाइस, yes sir Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ओके चलो। Yes, yes. अभी देखो, अब हाँ मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। हमने स्टार्ट की थी यूज केस से, जो रिक्वायरमेंट है बीए कलेक्ट करेगा फ्रॉम क्लाइंट, यूज केसेस के बेसिस पे हमारे पास क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट आईडी, Test scenario. उसके बेसिस पे हम टेस्ट सिनेरियो डिराइव करते हैं, हमें टेस्ट क्या करना है, राइट। उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनाते हैं, हाउ टू टेस्ट, हमें क्या क्या चीजें टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों का हम स्टेप वाइज बनाते हैं टेस्ट केसेस। एंड नेक्स्ट हम क्या बनाते रहे, उसका आरटीएम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम रिक्वायरमेंट पुट करते हैं उसके अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनाए वो भी पुट करते हैं। मीनवाइल एक टर्मिनोलॉजी हमने मिस कर दी, दैट इज द टेस्ट सूट। टेस्ट सूट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ योर टेस्ट केसेस। सैनिटी के अलग रहेंगे, फंक्शनल के अलग रहेंगे, नॉन फंक्शनल के अलग, जीयूआई के अलग, राइट। लाइकवाइज उसका अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली टेस्ट सूट, डन, ओके चलो। अभी देखो हमने आरटीएम डॉक्यूमेंट तो बना लिया जिसमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन है, देन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी हमने बना लिए। अभी हमें एग्जीक्यूशन करना है, बट हमने एक इंपॉर्टेंट फेज देखा था इस टीएलसी में कि बिफोर एग्जीक्यूशन हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन हो, अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो इंस्टॉल तो होना चाहिए, राइट। yes तभी हम टेस्ट करते हैं सकते हैं। सिमिलर गोस टू वेब एप्लीकेशन, आपका जो भी वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं पे सर्वर पे डिप्लॉय होना चाहिए, राइट। दैट इज नथिंग बट योर टेस्ट एनवायरनमेंट, ओके। इसी को पैरेलल वर्ड है गाइस, रिक्वायरमेंट आपको रहेगा टेस्ट बेड, टेस्ट एनवायरनमेंट इज नथिंग बट टेस्ट बेड। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ओके ओके। अभी टेस्ट एनवायरनमेंट क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म स्पेशली बिल्ड फॉर टेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब जो भी टेस्टर हम टेस्टिंग करते हैं ना, हमारे लिए जो भी एनवायरनमेंट सेटअप होता है, राइट, दैट वन इज द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। जो भी डेवलपर है उनके लिए जो भी एनवायरनमेंट होता है दैट इज द डेव एनवायरनमेंट, शॉर्ट फॉर्म में डेव बोलते हैं, डीईवी, और डेवलपर्स एनवायरनमेंट, राइट। एंड जब भी हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना कस्टमर के साथ बैठ के चेक करते हैं ना, दैट वन इज योर यूएटी एनवायरनमेंट, दैट इज द और यूएटी एनवायरनमेंट दैट इज User acceptance. राइट। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसका जो होता है टेस्टिंग वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे होता है, यूएटी एनवायरनमेंट पे। एंड वहां से भी अगर हमें गो अहेड मिलता है तो एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं हम, प्रोडक्शन में, राइट, Yes, लाइव में। yes, yes. दैट इज योर prod सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स ओनली गाइस, ओके, कुछ अलग नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो डेवलपर अगर अलग उनके मोबाइल पे चेक करेगा, टेस्टर अलग मोबाइल पे, लाइकवाइज कस्टमर उनके अलग मोबाइल पे, एंड एंड कस्टमर तो उनके खुद के मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, राइट। सिमिलर गोस टू वेब एप्लीकेशन,
जो डेवलपर है वो पर्टिकुलर अलग सर्वर पे टेस्टिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज द डेव सर्वर। जहाँ पे भी हम एज अ टेस्टर टेस्ट करते हैं, दैट इज द कीवे सर्वर और टेस्टिंग एनवायरनमेंट। जहाँ पे भी क्लाइंट के लिए टेस्टिंग होता है, दैट वन इज आल्सो डिफरेंट, दैट इज द यूएटी एनवायरनमेंट। एंड एक्चुअल प्रोडक्शन में एक्चुअल कोड जहाँ पे होता है, दैट इज द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ओके, सो दीज आर दी 4 बेसिक एनवायरनमेंट, that is the development environment, testing environment, UAT environment and production environment. Fine. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है देखिए। इट इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सिंपल, आपका मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल ऐप इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या है, आपका मोबाइल है। सिंपल। आपका अगर वेब एप्लीकेशन है तो आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है एंड जिस भी कंप्यूटर पे रन हो रहा है, दैट इज द हार्डवेयर सर्वर, राइट। और वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ओके, दिस ऑल आर द डिपेंडेंसीज। टेस्ट एनवायरनमेंट सिमुलेट्स द प्रोडक्शन और रियल टाइम एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट का मेन सिंपल पर्पस है, एंड यूजर जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, सिमिलर एक्शंस हम अपने खुद के एनवायरनमेंट में चेक करते हैं, लेटर ऑन हम उसका प्रोडक्शन पे पुश करते हैं या प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हैं, राइट। अनदर नेम फॉर टेस्ट एनवायरनमेंट इज द टेस्ट बेड। ओके, यहाँ पे क्लियर है गाइस, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन दोनों पे। मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके लिए मोबाइल लगेगा, सिंपल एज अपना समझिए। एंड अगर आपका वेब एप्लीकेशन है तो उसके लिए कोई तो सर्वर लगेगा, सर्वर मीन्स कंप्यूटर। डन है। Yes. ओके, एंड Yes, हर sir. एक यस, एंड हर एक का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, डेवलपर का, टेस्टर का, यूएटी टेस्टर का एंड एक्चुअल फाइनल प्रोडक्शन का। ओके, फाइन फाइन। ओके, चलो ठीक है, these are the some important parameters। ओके ओके, इतने ही पैरामीटर्स रिवाइज अब कर लेते हैं। ओके